I got commissioned in 97 December and 15th of July 99 I got injured. To me, it was never that something wrong has happened with me. If I wish to be independent, then I have to, do a lot of activities which is actually out of my comfort zone. So being a Fauji, it was always at back of my mind that how do I run. The first marathon which I did, 2009, is the most memorable one because उस दिन सिर्फ एक डिस्टेंस नहीं ट्रैवल किया था, उस दिन अपनी कमज़ोरियों को काबू करने की शुरुआत करी थी. It only happened because I thought that I can. Today, my biggest of loss, my shortcoming became my strongest of strength. One thing which confuses most of the people is that if there is a difficulty, if there is a challenge in the life, that challenge is not good. जिंदगी में दूसरों के ऊपर जीतना इतना मुश्किल नहीं है जितना अपने ऊपर जीतना है. I might be slow, but I'll keep my flow. I won't stop till I reach the top. The kind of spirit which is exuding, that was something which was really energizing. Rather than just talking, he wants to do things on ground. And the way he motivates people, it's amazing. He is the inspiration behind all of us, who has motivated us to come out of our hidden zone and be in front of the society. It is very important and it is very, very critical that in my mind I should always think that I can do it. So ladies and gentlemen, the moment has arrived. Can I request all of you to kindly rise up to welcome with a roaring round of applause for the legendary Major D.P. Singh. Thank you so much, sir. It's absolutely an honor and a huge motivation to see you. Thank you so much, sir. Thank you so much. Ladies and gentlemen, please be seated. Thank you so much. Which side, Shubham? Thank you. Wow. That was the word which came to my mind when I saw this video. And I'm sure all of you will also be feeling the same thing. So in today's event, wherein we spoke about technology and innovation, why we are having this session, you would have got the answer after watching this video. And let's try to understand more from Major D.P. Singh about his life's journey and what he has to share with us today. So Major, we are glad, absolutely glad to have you here. And let's start, because we have seen you have so many inspiring quotes, and I was trying to understand, okay, this is applicable for my life, this is applicable. So you have so many interesting quotes. So, put the blank screen. Right. So thank you firstly for making me sit on a Kingsley-like chair.
I hope it's I comfortable. feel like king. And a big round of applause for the ma'am, because I see sign language is being used in this platform. Very good, excellent. Thank you for the organizing committee who has actually thought about this. Excellent. Thank you, sir. So we try to have this in all of the NASSCOM events Wonderful. with the inclusion in mind always. Great. So, although I have questions here in this printout, but I feel like just having the conversation openly. That's better. So let's start with the beginning. Would you like to share your journey from being a young boy and having that dream of becoming a soldier? Well, as a kid, I was away from my parents. My father lost his job when I was very young, I think single digit age. And I was shifted to my grandparents' place, which is Roorkee. So the so-called bachpan was a quite disciplinarian type of a bachpan. Is it okay if I change the chair? It is too big for me. Yeah, that's better, I guess. I'm an ordinary guy. I don't feel comfortable on a big palatial chairs. That's good. Thank you so much. You're the lady, man. You're the lady. Yeah, this is better. Great. So as I was mentioning, my childhood was not very pampered one, but whenever we used to go to my Nani's place during chutti, is it okay if I use Hindi, English both? All of us are Indians, Hindustani here? Wonderful. So there when I used to go to my Nani's place, I used to feel कि यार यहाँ पे तो बड़ी ऐश है. छुट्टी में as it is nobody used to ask anything. खाओ पियो मौज करो मित्रों type of affair. And when I used to come back to my grandparents' place, दादा दादी तो यहाँ बैठना है, ये करना है. They used to time कि ये घिया की सब्जी नहीं खानी, तो दो चपेट पड़ती थी और बोलते थे खानी है खा, नहीं तो ये नहीं मिलेगी. उसके बाद हमने मांगना ही छोड़ दिया कि जो मिल रहा है खा लो. So that was the first learning कि जो मिल रहा है वो अच्छा है, इसको ले लो, नहीं तो भूखे रह जाओगे. But one day I thought of running away from that not so, so-called difficult thing for that kid. And that was the first U-turn of my life. Because I had not yet gone out of my city limits. 4-5 kilometers I have walked. I think that was somewhere in 8th class. जब मेरे को किसी एक जानने वाले ने देखा, पहचाना, and he made me sit on his bicycle and rode me back to the outside of my house and left me there. See the wisdom of this man. He was a worker who constructed my grandfather's house. And see the wisdom of his man. उसने घर में जाके शिकायत नहीं लगाई कि आपका बच्चा भाग रहा था. नहीं तो उस शाम को क्या होना था फिर मेरा बुरा हाल पता है. उसने बाहर छोड़ा मेरे को, बोला कि ऐसे नहीं किया करते. And he went away. But while I was coming back, that U-turn was the first U-turn of my life, because that made me think that whatever I was doing, if I run away from my realities, I will never be able to prove my worth. So whatever situation you are in, today I am able to put it into statements. वो बच्चे को नहीं मालूम था कि इसके क्या मतलब है, कैसा सोचना है, क्या इसकी philosophy है, nothing was known to that kid. बट उसको समझ में आ रहा था कि मैं यहाँ से भाग नहीं सकता हूँ. दिस इज द प्लेस विच हैज़ बीन गिवन टू मी फॉर लिविंग. आई हैव टू लिव हेयर, एंड हेयर ओनली आई हैव टू प्रूव माई वर्थ बाई बिल्डिंग माई इनर स्ट्रेंथ एंड बाई इवॉल्विंग आउट ऑफ दीज सिचुएशंस एंड डिफिकल्टीज. दिस विजडम हेल्प मी व्हेन आई गॉट माई बिगेस्ट ऑफ डिफिकल्टी व्हेन आई गॉट इंजर्ड इन द वॉर. But after coming back, the good thing happened that I was connected with my religion, Sikhism, by my grandparents.
एंड टुडे आई माइट बी टेलिंग यू कि वो बड़ी डिफ़िकल्ट लाइफ थी, लेकिन जो कुछ मैं हूँ आज, इट इज़ कर्टसी द लाइफ एंड द टीचिंग्स गिवन बाय माई ग्रैंड पेरेंट्स एंड द सिखिज्म. Because when I started going to Gurdwara Sahib, I understood the history and sacrifices of the Gurus who gave everything for the unknown people without shedding even a single tear. 10th Guru gave his whole family, his father, his children, and not even a single tear was shed by him for the unknown people. Good for, service and sacrifice is something which is inbuilt in the religion. And I related it to armed forces. Because in army also, armed forces also, the soldiers live for citizens of the country. Unknown, I don't know any one of you personally, maybe one odd. The soldier today also who is guarding that border, he may not be there tomorrow, he may not see the next moment, but his goal is very clear, his aim is very clear, that I have to safeguard my nation. Come what may, if somebody has a nefarious eyes towards my motherland, I would stand in between the enemy and the citizens of the country. So this is something, again, service and sacrifice for the unknown people. And this connect, beautiful connect, actually made me understand that if I have a life, that is in the armed forces. That's how I landed up there. So the discipline and doing seva, these two things shaped your life. If I may say so, I don't know whether I am able to do seva or not, but yes, I try to do a bit. We will come to that point. You are actually doing a lot of seva, but let's come to that point later. You spoke about war. So, Kargil war, you were part of it. Would you like to share about it? Because we, being citizens, we may only hear from the news about it, but you experiencing it. Would you like to share something about it? What happened to you in that? See, firstly, every soldier, when he gets inducted into any type of armed forces, he feels that if one day he'll be able to defend the nation in a war zone, that is the biggest achievement for him. Knowing well that jinda rahe ya na rahe, because country comes first, then comes your team, and in the end comes your own ease and comfort. This is the Chatwood motto we follow. इसीलिए आपको देखा होगा किसी भी सिचुएशन में, किसी कैलेमिटी में, मैन मेड या नेचुरल कैलेमिटी, अगर कोई भी मशीनरी फेल हो जाती है तो आर्म फोर्सेस को बुलाया जाता है एंड दे बिकम सक्सेसफुल बिकॉज दे फॉलो दिस मोटो. तो जब लड़ाई थी, लड़ाई में इट वॉज वेरी क्लियर दैट ईदर यू गेट किल्ड और यू किल द एनिमी. देयर इज नो इफ्स एंड बट्स बिटवीन. So you better kill the enemy, because otherwise you will get killed and the whole task of defending the nation will go for 6. Having said that, I as an injured soldier, 100% disabled, I'll show you the injuries, giving you the guarantee of this fact that ladai is not a solution of anything. लड़ते हैं, मरते हैं, कई घर बर्बाद हो जाते हैं, किसी का हस्बैंड, किसी का बेटा, किसी का भाई, किसी का बच्चा जिंदा रहता है, कई बार मर जाता है, कई बार लॉस ऑफ लिम्स एंड such disability occurs. But after doing all that, it is only on the negotiation table that you resolve the issue. तो चाहे लड़ाई बॉर्डर पे हो, चाहे लड़ाई झगड़े आपस में हो, इट इज़ ऑफ नो गुड. सो बेटर ये है कि अगर आप प्यार से किसी को जीत सकते हो. एक सोल्जर ये बात आपको बोल रहा है जो लड़ चुका है, और फिर दोबारा से अगर ज़रूरत पड़ेगी तो फिर हथियार उठा के लड़ूंगा, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट. लेकिन फिर भी मैं आपको ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि लड़के किसी चीज़ का सोल्यूशन नहीं निकाला जाता. लड़ना सबसे आसान चीज़ है. अगर प्यार बांट के कुछ जीत सकते हो, किसी का दिल जीत सकते हो और प्यार से किसी चीज़ को जीत सकते हो, तो वो कोशिश करो. बहुत मुश्किल है वैसे वो, लेकिन करना शुरू करोगे तो आसान भी हो जाएगा. बहुत खूब बात कही आपने. मैं आपको बताऊं, गीता में लिखा हुआ है कि अगला क्षण आना है कि नहीं आना है. ये चीज़ वहाँ पर दिखती है,
I'll tell you a small incident. हमारे एक बंकर को ध्वस्त कर दिया गया था एनिमी फायरिंग में. तो there was a soldier of mine who was mending the rooftop of that bunker. उसके ऊपर सैंडबैग डालने थे. तो एकदम क्लियर वेदर एंड ही स्टार्टेड डूइंग द रिपेयर. वो छत पे चढ़ा सैंडबैग लेके. आई डोंट नो कहाँ से बवंडर आया, एकदम तूफान आना शुरू हो गया, काले बादल छा गए. बगल वाले बंकर के ऊपर CGI शीट, टीन की शीट थी एक, वो उड़ी, टूट के उड़ी और उसके गर्दन में लगी. एंड ही वॉज नो मोर. आई कुड टर्न माई फेस दिस साइड एंड व्हेन आई टर्न द फेस दिस साइड ही वॉज नो मोर. एट द सेम टाइम एक बंकर के ऊपर अटैक आया जिसके अंदर 3 बंदे बैठे थे मेरे. हमने सोचा कि ये तो गए काम से, क्योंकि बंकर बिल्कुल नेस्ता नाबूद हो गया था. But then very next moment I see all 3 of them coming out and one 6-foot hefty guy telling me, साहब जी आज तो हो गया था, thank you. And the same guy, once he went back to the headquarter area, he was sweeping outside temple. A stray bullet comes from somewhere, hits him and he is no more. So actually you see such things which is mentioned in the holy books. अगला क्षण आएगा कि नहीं आएगा. आप बहुत लकी हो, आपके पास फिर भी थोड़ी बहुत ही गारंटी है कि ज़िंदगी जी सकते हो. तो प्लीज़ डू नॉट वेस्ट इट, एन्जॉय योर लाइफ. अगर कहीं से खुशी मिल रही है तो लीजिए, नहीं मिल रही है तो बांट दीजिए, आ जाएगी आपके पास भी. एन्जॉय. So you spoke about death of your fellow soldiers. You all talk about death. No one knows about what happens after death. So after the war, when you were taken to the hospital, you were declared as dead. And after some time, doctor could revive you and could get you back to life. Do you remember anything? What happened? I remember only cheek. बॉम्ब जो गिरा था मेरे बगल में गिरा था 1.5 फुट दूर. और उस बॉम्ब की सिखलाई, एज पर द टीचिंग ऑफ दैट बॉम्ब, इट इज़ नोन एज 52 mm mortar bomb. From the point of impact, 8 meter dia is taken as killing zone. That means कि अगर यहाँ गिरेगा, so the diameter of 8 meter, उसके अंदर जो भी होगा, it is taken for sure that कि वो मर जाएगा, क्योंकि उसका impact इतना ज़्यादा powerful होता है. But from me it was hardly 1.5 meters away. तो मुझे चोट तो लगी, बहुत सारी चोटें लगी. There are 73 bomb particles which are still inside my body. लेकिन अनकॉन्शियस हुआ मैं फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में. तो जो मुझे याद है सिर्फ ये है कि चीख निकली, उसके बाद आई कॉन्ग्ड ऑफ. बट हेयर आई वुड लाइक टू टेल यू एंड शो यू द पिक्चर ऑफ. इसको चालू रखो और इसको ब्लैंक कर बता दूंगा मैं जहाँ पे करना है. हाउ डू आई स्विच ऑफ? माई टीम, बॉयज ऑफ 7 डोगरा, इनकी करेज, बिकॉज माई पोस्ट वॉज हार्डली 80 meters अवे फ्रॉम द एनिमी पोस्ट. एंड 80 meters इज नथिंग. 80 meters में स्मॉल आर्म वेपन से पॉट शॉट लेके बंदे को मारा जा सकता है. And there was a river stream flowing behind my post, and one of the 4 stretcher bearer was a weak swimmer. Knowing very well the danger of getting killed by enemy action or slipping in the river zone, the 4 stretcher bearer did not shy away from their task, their duty. And this duty was not given by any manager, any boss. It is the self-taken duty. क्योंकि मैं injured था, and as I already told you, country comes first, then comes your team. So when I say your team, means looking after the team is my responsibility. So every team member looks after each other. So you don't have to worry about your own self. And my own ease and comfort comes the end. तो उसकी जरूरत ही नहीं पड़ती, अपने आप ही हो जाता है. So because perhaps I was able to look after them, take care of them, they did not left my hand when I was badly injured. It is their courage which evacuated me out of that battle zone. And then this gentleman, when I was declared dead by the surgeon on arrival, it was because of the 2.5 hours journey and a cardiac arrest in between.
सर्जन फेल्ट की ये डेड बॉडी है, इसको ले जाओ मॉर्चरी में. द जेंटलमैन कर्नल राजेंद्र सिंह, आई एम ग्रेटफुल टू माई टीम, कर्नल राजेंद्र सिंह and unknown many medics who helped me and gave blood to me. इनकी courtesy, the efforts put in by them, today I am sitting in front of you. Otherwise, माला पे फोटो पे माला वाला टंगी होनी थी अभी तक. So each one of them has displayed the courage which is required to take care of each other and keep the country first. I'll be always grateful to them, and this also, you know, I don't lose the opportunity to convey कि मेरे रगों में मेरा खून नहीं बह रहा है. I don't know how many unknown Indians have actually given blood to me, A positive. So this is purely Indian blood, not my khandani खून. And let me also add here, ladies and gentlemen, when you come into any such situation where you need blood, फिर हमारे सारे के सारे वो बैरियर्स होते हैं ना, आई एम सिक, यू आर मुस्लिम, आई एम दैट, यू आर दिस, आई एम फलाना, यू आर ढिमका. सोशल मीडिया पे जो लड़ाइयाँ होती हैं, अननोन फालतू की चीज़ें होती हैं, वो सब टूट जाते हैं. बिकॉज देन यू ओनली लुक फॉर ब्लड. आई डेयर एनी वन ऑफ यू कैन एक्चुअली स्टैंड एंड से आई नीड सिक A positive. Nobody can do that. So please be thankful and have gratitude to the Almighty that you are very well, you are living a well life, comfortable life. ज़रूरत ना पड़े किसी को, लेकिन वो फजूल की चीज़ों में मत पड़िए, भाईचारा बना के रखिए, क्योंकि सबसे पहले हम क्या हैं? जोर से बोलो यार, क्या है? इंडियन, हिंदुस्तानी ही है. बाकी डिवीज़न दिमाग की है. पता नहीं कितने सालों से हमारे को लोगों ने बांटना शुरू किया हुआ है. अंग्रेज आए, मुगल आए, ये आए, वो आए, हमने अभी तक बंटना नहीं है, ये नहीं सीखा. हिंदुस्तानी बन के रहो, अच्छे रहोगे. So, we saw in the video that when you got to know about your leg getting amputated, you were still positive. तो पता नहीं इतना करेज, ये पॉजिटिविटी इतनी कहाँ से आई आप में. But if we try to read about your injuries, Google says more than 100% disability. I can't even imagine. मतलब ये amputated leg is something which is very much visible. But what is this 100% disabled? See, what you see on my body is just a leg which is not there. अब बेचारी जो चीज़ है ही नहीं, वो क्या तंग करेगी? तंग करने वाले तो वो है ना जो है, वो जो है वो ये है. So this is the first label diagram I could make in my life, because स्कूल में तो बड़ा निकम्मा था. I never used to make anything like this. And there are few injuries which are still not being, you know, marked here, because recently I have been diagnosed with early signs of Parkinson. This finger is also injured. और विश्राम में खड़ा हूँ तो वो दिखा नहीं सकता. So all these injuries, cumulative hearing loss है. कभी झांपड़ पड़ा होगा फादर का या मदर का, कभी तो चांटा पड़ा होगा लाइफ में, है ना? तो वो घंटी बजती है ना हमेशा, दैट इज परमानेंट इन माई बोथ द ईयर्स. टिनाइटस जो भी आप इसको बोलते हो, हाई फ्रीक्वेंसी हियरिंग लॉस. तो हमेशा ही मेरे को झांपड़ का अफेयर याद आता रहता है कि पिताजी का झांपड़ पड़ रहा है. सो क्यूमुलेटिवली ऑल दीज एड्स ऑन टू मोर देन 100% डिसेबिलिटी. एंड मोर देन दीज इंजरीज जो मेरे को तंग करती हैं वो ये छर्रे करते हैं. दिस इज द स्ट्रैपनल इन माई चेस्ट एरिया, दिस इज माई एम्पुटेटेड लेग. जब पहली बार ये इसका एक्सरे निकाला था तो टेक्नीशियन यहीं पर पूना में, आर्म फोर्सेस मेडिकल सेंटर जो AFMC है वहाँ का टेक्नीशियन था. ही सेड कि सर गड़बड़ हो गई, सॉरी माफ़ करना. मैं क्या हो गया? कहता है एक्सरे ख़राब हो गया. मैं कहा दिखा क्या है? कहता देखो पूरा दाग दाग पड़ा हुआ है. मैंने कहा ये दाग नहीं है, दीज आर सो कॉल्ड सोवेनियर्स गिवन बाई इन आवर नॉट सो फ्रेंडली नेबरहुड. संभाल के रखने की चीज़ें संभाल के रखी हुई है. अब इसमें से ये राइट साइड में मेरा एल्बो का है, यहाँ
So these shrapnels keeps on giving me pain. Now this pain actually is, you know, incurable because raw iron के particles हैं जो, अब आपको मैं एक और दिखाता हूँ, ये देखो, the one here, all these are in joints, and recently I found there are 2-3 hair in my right shoulder also. तो ये जब ये तंग करते हैं, जब पेन करते हैं, तो there is no answer to it, there is no cure to it. फिर आप जितना मर्जी कुछ भी ले लीजिए, कुछ भी पी लीजिए, छोटा बड़ा पटियाला जो मर्जी ले लीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता. There is no cure to it. So might as well, when you know that you can't change the things, you embrace it, accept it. If you can't change anything in your life, see, you can't change your color, you can't change your height now anymore, you can't change your parents, you can't change the place of birth, you can't change your name, change कर सकते हो, but you can't, यार आजकल तो बीवी भी चेंज कर लेते हैं वैसे. But there are few things which you can't change. So the things which you can't change, better embrace it, accept it. So since the day I have started, you know, कि मैं इनको गले लगा लूँ जब भी पेन होती है, I have started rather feeling bad, I started laughing. और मुन्ना भाई MBBS देखी है आपने? Actually it works. So whenever there is a pain, I laugh. लड़ाई होती है मेरी हंसी में और मेरी पेन में. तो मैम बताओ जीतता कौन है? स्माइल का कोई लाइन, इज देयर अ साइन फॉर स्माइल? स्माइल इज अ स्माइल, इट ऑलवेज वॉन, और जीतती रहेगी हमेशा. तो डिसेबिलिटीज ये हैं जो तंग करती हैं, लेकिन छोटी मोटी होती है ना तो बंदा सोचता है कि यार वो गाली भी देगा, इरिटेट भी होगा, जस्टिफिकेशन भी देगा. जब बहुत सारी हो जाती हैं तो फिर बोलता छोड़ता है, चल परा यार, छड़, एंजॉय नाउ. I'm just trying to understand how is it possible to be so positive and have such a beautiful smile after that. So whenever we see any of your videos, you are running, you're showing your strength, your courage, and the joy is visible on your face. But it's only that what we can see from outside, but definitely it must not be that easy. So is it easy to run in such a life? See, life is always relative. मैं एक बार एकेडमी में गया हूँ, OTA गया, जहाँ पर कैडेट्स को ट्रेन करके ऑफिसर बनाया जाता है. So I met youngsters, those who were undergoing training जो है. So one of the boy told me कि sir, this is not the army which we thought I am going to join. I said, what happened? He said, ये गलत है, वो गलत है, ऐसा हो गया, वैसा हो गया. तो मैंने बोला उसको कि देखो बेटा ऐसा है, if I have the power of showing you next 10 years, कि 2 years you go to IAS, 2 years you go to army, 2 years you go to bank, 2 years you join corporate, and 2 years something else, and then whichever you can find is better, come back and start your life again. Not possible. Not possible, na? So relatively what you are living, wherever you are living, is the best thing which you have got in your life. Everybody, each one of us. So when I say it is relative, now I know कि पेन जो है वो नहीं जा सकती. अब मेरे पास दो ही ऑप्शन बचते हैं, या तो मैं एक्सेप्ट करके गले लगा के उसके साथ जीना सीख लूँ और मस्त रहूँ, तो क्या होगा, पेन थोड़ी कम हो जाएगी और कभी कभी शर्मा के चली जाएगी. या मैं और ऐड ऑन करूँ उसमें, एडिंग फ्यूल टू फायर, एक तो रोना हो ही रहा है, ऊपर से और रो, दर्द हो रहा है, गाली निकालो, ये करो वो करो, तो किसका नुकसान है? I am a fool if I am adding further misery to my own life. पता हम सबको है ये बात, मगर मैंने बोला ना रिलेटिव है, क्योंकि थोड़ा बहुत होता है तो बंदा सोचता है कि चल यार 4 दिन गाली निकाल लेता हूँ. अब जब पता है कि कांस्टेंट है, हमेशा ही रहना है, आई मीन इवन इफ यू टेल मी कि यार आप रो, जोर जोर से रोओगे ना तो आपकी टांग निकल के आ जाएगी एक, या ये श्रैपनल बाहर आ जाएंगे. नॉट पॉसिबल. अगर ऐसा हो तो मैं बहुत जोर जोर से रोऊं ताकि 2-4 टांग एक्स्ट्रा भी आ जाए. नॉट पॉसिबल. So when something is not possible, you might as well start enjoying the life and start living it beautifully.
क्योंकि जीना तो है। ऐसा नहीं है कि मेरे को कभी कभी नेगेटिव थॉट्स नहीं आते हैं। जो मैं इतनी बड़ी बड़ी ज्ञान की बातें कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि हम बहुत दूध का धुला हूँ मैं। ऑल टाइप ऑफ नेगेटिव थॉट्स डू कम टू माई माइंड। एट टाइम्स आई ऑल्सो थिंक अबाउट डूइंग सुइसाइड, क्योंकि ह्यूमन बीइंग है, आते हैं दिमाग में नेगेटिव, एंग्जाइटी भी होती है, डिप्रेसिव थॉट्स भी आते हैं। However, over a period of time, I have realized that these are all, minuscule phases of the life, which you have to somehow pass. The moment you pass that negative phase, you are again into the positive life, because basically, I feel that every human being is a good human being and a positive human being. थोड़ा बहुत आ जाता है because of situational circumstances, अब उसको कैसे हैंडल करना है, यही हमारी कला है। अगर कोई बोलता है कि नेगेटिविटी बिल्कुल नहीं है, तो शायद या तो वो झूठ बोल रहा है या फिर बीमार है, उसको कहीं मिलना चाहिए। क्योंकि ये इमोशन मैंने खरीदे हैं क्या? यू थिंक यू बॉट सम नेगेटिव इमोशन फ्रॉम परचून की दुकान? नॉट पॉसिबल ना। दीज आर नेचुरली गिफ्टेड थिंग्स टू अस। नाउ एज ए ह्यूमन बीइंग एडिशनली वी ऑल्सो हैव बीन गिवन विजडम। दिमाग दिया गया है कि सोचो आपके लिए फायदे की चीज क्या है और नुकसान की चीज क्या है। नाउ व्हेन यू हैव द विजडम यू कैन अप्रिशिएट एंड अंडरस्टैंड, एंड ईच वन ऑफ अस अंडरस्टैंड दैट। छोटे बच्चों को भी पता होता है। तो अब वो नेगेटिव थॉट्स को कितनी देर तक आपने रिवाइव करके फीड करते हुए रहना है और कितना लंबा जीना है, और कितनी जल्दी उसको स्विच ऑफ करके बाहर निकल के दूसरी तरफ अपने आप को डाइवर्ट कर लेना है। दिस इज द कला, दिस इज द आर्ट ऑफ लिविंग। नो 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 नो, पता चले रविशंकर आके बोलने आर्ट ऑफ लिविंग तो मेरा है, तू कैसे बोलने लग गया? आई एम टॉकिंग अबाउट लिविंग ब्यूटीफुली, राइट? वॉट एवर इज द आर्ट ऑफ लिविंग। And how do you switch off? Switching off is never by using negative words. So most of the time we use such things. Don't do this. Don't think like that. Don't worry about it. When the moment you say don't dash, तो don't के ऊपर ध्यान नहीं जाता, dash के ऊपर ध्यान जाता। Don't think, you will think. Don't do it, you will do it. बेटर तरीका क्या है? डाइवर्ट। हाउ डू यू डाइवर्ट? बच्चा सिखाता है हमारे को। दैट टॉडलर हु जस्ट स्टार्ट मूविंग अराउंड ऑन अ फ्लोर, मम्मा उसको कई बार टोकती है कि बेटा डोंट फिंगर इन दैट प्लग, बट स्टिल ही विल गो एंड डू दैट। उसके लिए वो गेम है। व्हाट इज द ऑल्टरनेटिव? थ्रो अ बॉल ऑन द अदर साइड। Attention will get shifted toward the ball. He will no more finger. Our brain still behaves like that. You need to learn to cheat the brain. So divert your attention towards something which you enjoy doing when you are in that phase, down phase, negative phase. This trick I am still trying to learn. And if you also start learning about this trick, slowly and slowly the negative phase will start reducing and you will start staying more on the positive side. So as I understand, the prosthetic legs are not supposed to be used for running. You It's are for sorry, I walking, got right? diverted. मैं diversion की बात करता ना, divert हो गया। So you were asking me that how do I run? Now running actually came to me as a help. I was never interested in long distance running when I was having the whole body intact. It came to me as a help because firstly all those people who put a question mark on my ability poked me to prove the ability on ground. As a soldier I am not supposed to give any lecture. Unless I have done it, whatever I have done it, I am only talking about that. I am not going into कि मैं ये करूँगा वो करूँगा आप मुझे वोट देना। मैंने वोट नहीं मांगनी आपसे। एडिशनली जितनी मेरी इंजरीज थी, आई हैड शोन यू द इंजरीज, स्पेशली द स्टमक पार्ट, इट इज वेरी वेरी टेरेबल। देयर इज अ पार्शली इंटेस्टाइन्स आर रिमूव्ड, एंड जो दोज हु नो अबाउट आयुर्वेदा, आधी से ज़्यादा बीमारियां पेट से निकलती हैं। सो फ्लैटुलेंस, म्यूकस एंड ऑल दैट स्टफ, आई डोंट वांट टू नेम ऑल दैट, यूज्ड टू बी द डेली अफेयर।
and I tried allopathic, naturopathy, this pathy, that pathy, nothing worked. But when I started running, the whole body started behaving. The organs understood that हमारा boss जो है ना बड़ा कड़क है. Who's the boss? You are the boss of your body and mind. You make them behave the way the body and mind should behave. It's in your control. So you push them, they will behave. If you give them comfort, थर्ड पार्टी का सपोर्ट ले लोगे, गोली दे दोगे, तो ऑर्गन बोलेगा अच्छा बेटा चल मेरा काम तो तू कर रहा है, अब तू ऐश कर. When I started kicking them, they started behaving. All the organs came on line and they started acting the way they are supposed to act. So again it was relative. Now the choice was between pushing, getting injured additionally by running, and still feeling hungry, feeling tired, sleeping well, and feeling happiness because endorphins used to get generated when you do some physical activity, versus living a life which is sedentary, which is full of muck, which is full of sluggishness and this and that type of ailment. अब दोनों में से क्या choice है? So when I ran, I felt that goodness, तो मैंने सोचा ये better है. हालांकि if I show you, after running these type of injuries I used to get, because जब मैं दौड़ा था 2011 में पहली बार with blade, this is a socket which I am wearing in my prosthesis on my amputated leg, this hard part. Now this much amount of my body is inside this hollow socket. So when you run, the whole body goes up and down, and the friction gets created between the hard socket and soft skin. So friction for 2.5 hours. The best time which I clocked for 21 kilometers is 2 hours 10 minutes. Any runner here? Any marathon runner here? मैंने पहले पूछा था एनी रनर है, फिर मैंने पूछा एनी मैराथन रनर है, तो कोई रनर भी नहीं है? रनर तो होने चाहिए. सो यू कैन अप्रिशिएट 21 किलोमीटर भागने में जो बैंड बजती है वो तो बजती है, मगर ऐसी चोटें भी लगती थी. सी दिस इज द टाइप ऑफ ब्लड फुल ऑफ सॉक्स आई यूज्ड टू रिमूव. मगर क्वेश्चन ये है कि वही थिंग्स आर रिलेटिव. Choice is between enjoying the life after pushing yourself, because this is where the growth is, or living in your comfort zone and staying wherever you are. तो अगर एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट चाहिए तो कंफर्ट जोन से तो बाहर आना ही पड़ेगा, नहीं तो जहाँ हो वहीं रहोगे. ऐसे ऐसे लोग भी बहुत चाहिए जो जहाँ है वहीं रहे, नहीं तो फिर बाकी के सारे लीडर कैसे, जो लीडर बनना चाहते हैं वो आगे निकल सकते हैं. Rest would follow as a team member. So I enjoyed growing, so I started kicking myself and I started running more. So running was not easy, especially for a person who never used to run. I mean, I just detest long distance running. मगर जब एबिलिटी के ऊपर क्वेश्चन आती है तो सोल्जर को इज्जत प्यारी है. आप में से कोई भी अगर अपनी इज्जत को ध्यान में रखते हुए काम करेगा ना तो कभी फॉल्टर नहीं होगा. जिसने अपनी इज्जत रखनी नहीं सीखी वो किसी दूसरे की इज्जत क्या रख लेगा? वो देश की इज्जत कैसे बचा लेगा? झंडे की इज्जत कैसे बचा लेगा? दिस इज द फर्स्ट ट्रेनिंग विच वी गेट इन द आर्म फोर्सेस. लर्न टू रिस्पेक्ट योरसेल्फ. So with this passion, with this positivity, focus, discipline, you have achieved many things now in your life. Now, it's a big list that you are a first blade runner of India. You are first amputee to run half marathon in high altitude. You are the first Asian disabled to do a solo skydiving. First Asian disabled to fly aircraft. So I'm curious to know, like, what excites you more about future now? Like, are there any new projects or passions that you want to dive into? I don't know. पहले मैं ज़मीन पे दौड़ा, फिर हाई ऑल्टीट्यूड पे दौड़ा, फिर 1 में टिकट लेके स्काई डाइविंग करा. 1 में टिकट, ऊपर तो जाऊंगा लेकिन कूद के, नीचे लैंड करने वाला टिकट नहीं था. फिर चॉइस हुई कि चलो हवाई जहाज उड़ा के देख लें, तो हवाई जहाज भी उड़ा लिया. अब इसके ऊपर तो बाय द वे आई डोंट प्लान थिंग्स. For me,
accepting the way life is coming is the best plan. I know you will say कि यार ऐसे कैसे होता है, HR वाला तो पूछता है अगले 5 साल में आप कहाँ हो, तो जवाब कैसे देंगे? तो वो ठीक है, आंसर देने के लिए वो HR वाले ने भी सिर्फ आंसर सुनना है, वो nobody is going to go and monitor कि अच्छा तूने तो बोला था 5 साल में यहाँ, तू पहुँचा नहीं वहाँ पे. That is only for the sake of answer. Otherwise, the way life comes your way, because I totally blindly believe on Almighty. जितना ज़्यादा कष्ट आता है उतना मेरा जो बिलीफ है वो और स्ट्रांग हो जाता है. Because I feel He loves me and He keeps giving me a lot of challenges, and challenges are only given to the people who are surely to get success in the future. Next time if you have a difficulty in your life, if you have challenge in your life, feel good about you, because you are the lucky one who has been given that challenge. चैलेंज के थ्रू ही आपको ग्रोथ मिलेगी हमेशा. घर बैठे बैठे अगर ग्रोथ मिल जाएगी ना तो फिर तो सारे घर बैठ जाएंगे यार, फिर काम करने की क्या जरूरत है, राइट? तो मुझे भगवान जो है, यू सी पिंग पोंग बॉल, उसको अगर आप ऐसे छोड़ दोगे तो कहाँ तक आएगी, ऐसे आराम से छोड़ोगे तो कहाँ तक आएगी, यहाँ तक आएगी. छोड़ोगे तो यहीं तक आएगी ना, आराम से छोड़ोगे तो. लेकिन अगर जोर से पटकोगे तो कहाँ जाएगी? तो जोर से पटकना आसान अच्छी चीज है कि ऐसी छोड़ना आसान चीज? जो जितनी जोर से पटका जा रहा है वो उतना ही ऊपर उठेगा. तो मुझे प्लान करने की जरूरत नहीं पड़ती है. I only try to live in those moments and make best of whatever I can, and this is what I say here. Accept your reality. जहाँ भी हो, जैसे भी हो, सब अच्छा है, and put your best foot forward. There was a time when people used to think कि मैं amputee हूँ तो मेरा क्या होगा. God was kind enough to make me the first amputee marathon runner of India, then blade runner of India, then highway route में भागे जहाँ भागे. So the loss of mine actually became the biggest strength of mine. How could it become? Because I accepted it. This is my shortcoming, this is my weakness, this is my drawback in the eyes of public. Now let me make best out of it and make it my strength. I'm sure many of you sitting here must have found this fact in the life. कभी कभी क्या होता है, जिस सब्जेक्ट में बच्चा वीक होता है उसके जब पीछे पड़ जाता है तो ही बिकम्स अ PhD होल्डर ऑफ दैट सब्जेक्ट. डॉक्टरेट भी कर लेते हैं लोग, बिकॉज एबिलिटी, थिंकिंग, इट्स ऑल, इट्स नॉट रिलेटेड टू एनीथिंग हैविंग एंड नॉट हैविंग. सो आई डोंट प्लान. So by embracing your problems, you have made an exemplary life of yourself, but it's not just about your own life, but you are now inspiring many others. So the t-shirt you're wearing, the challenging ones, would you like to share something about it? When I ran my first blade run, I realized that this is not a tukka. That was my 4th half marathon. Why I am saying it was not a tukka? Because none of the amputees before me had done so in the history of India. So first run I could have done by fluke, दूसरी, तीसरी, चौथी, हर बार तुक्का नहीं हो सकता. So when I got confirmed that this is possible, highly possible, that's when I started the group, the challenging ones. I said, now let me share this information, this knowledge, this so-called wisdom with other amputees, that you are not challenged, you are a challenger. Something has been taken away from you because Almighty knows that without having limb or one limb, all 4 limbs, you can perform, live a life so beautifully which many people cannot think with full body intact also. So who is more able? All these definitions of ability, disability, so-called whatever you name it, is totally cock and bull. It's in your hand. And that power has been given to us, each one of us, by Almighty, each one of us. तो तब मैंने जो ये शुरू किया उसका पीछे कारण यही है that this attitude shift, if it becomes possible in the mindset of the people like me, perhaps they will do a lot of beautiful things.
I started off with single DPCing as an amputee. There are more than 3,000 amputees connected with me today, and many have conquered many things. You name a thing, you name a sporting activity, be it climbing Himalaya, cycling, badminton, running, swimming, and many other things, shooting, whatever you name it, they are there. Because they have accepted their reality. उससे पहले क्या होता था, लोग छुपा के रखते थे. It's very easy for me to wear a trouser and hide my disability. Nobody will come to know. किसी को लगेगा कि शायद थोड़ा पैर में चोट लगा होगा तो चलता. Till the time you will keep hiding your shortcomings, you will never grow. So I started showing it off, and I take pride in sharing that I am an amputee. This is my reality. I accept it. Now let me put the best foot forward and see the difference. Look at the smile on their faces. Because they have accepted it. What an inspiration you are for all of us. अच्छा, by the way, let me add you here. Ma'am, time and again is telling me कि बड़ा अच्छा काम किया, inspiration है. मैंने ऐसा कभी नहीं कुछ सोचा कि मैं inspiration बनूंगा या मैं पता नहीं award जीतूंगा, लिम्का रिकॉर्ड बनेगा. As I mentioned, the only motto which I follow is this. Again, I am showing you for the benefit of you all. जिंदगी जब जीनी है तो खुल के अच्छे से जियो. बाबू मोशाय. This is the promise which I made to myself when I was told on the hospital bed that your leg is getting amputated. I made a promise to myself that I will never compromise with the quality and standard of my life. Because of this promise, whatever has happened, उसके कारण आप ये word जो use कर रहे हो मेरे लिए, मैंने नहीं कभी किसी के लिए, I never thought कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, होता चला गया. And that's why I feel I am most blessed soul on this earth, because Almighty made me live a life which is so full of challenges and so full of achievements that it generate automatically hope to many people. मैंने नहीं चाहिए, वो जो करवा रहा है ऊपर वाला बैठ के, मैं सिर्फ उसको करने की कोशिश कर रहा हूँ. Thank you so much for still inspiring us. So now let's hear it from audience if anyone would like to ask any questions. There are two hands. You can give this mic. Namaskar, sir. Thank you so much for sharing the story with us. It was definitely very motivating and inspiring. Like people like us, if I talk about, just wanted a tip from you. We go with the flow of life, right? And we keep hustling as well. But we sometimes just don't understand that when are we getting into the comfort zone. So how to realize that this is a comfort zone and you have to come out of it, right? So that's something, if you can share your views on that. See, it's okay to get into comfort zone once in a while. That's because you can't be एकदम टिकी बू hard thing कि X होगा तो X ही होगा, A होगा तो A ही होगा. ऐसे नहीं होता है. But what you need to remember is, if you are asking this question, that means you are coming to know that I am in comfort zone. Each one of us come to know. अपने अंदर दिल से खुद पूछो, पता चलता है कि नहीं चलता. अब सबको जब पता चलता है तो वही चीज है आपको याद करा रही है कि काका wake up. Thank you so much. So we can take that as one last question. Because I am okay with whatever way is your timeline. Please. Can you tell me about the role of spirituality in your journey, especially after challenges? Actually, it is the spirituality only which made me get evolved out of challenges, because it teaches you to accept the things easily. And when you make peace with something, it becomes easy for you to live through that.
For making peace with something, accepting the thing is important. और spirituality, कोई भी religion हो, उसको अगर आप spiritual angle से देखो तो वो यही बोलता है, रज़ा में रहो, उसके आप आगे सिर झुकाओ, accept कर लो कि ठीक है जी, आपने जो दिया सिर मत्थे। और प्रेयर क्या होती है? आप थोड़ी सी करेज दे दो कि जो आप मुझसे उम्मीद कर रहे हो उसको मैं लिव अप टू एक्सपेक्टेशन आपकी कर सकूं। जस्ट सीक करेज, तो वो भी मिल जाती है जब आप प्रेयर कर रहे हो, फिर रह क्या गया? सो दिस इज द इजी वे टू लिव अ लाइफ. I was diagnosed with PTSD. I have seen psychiatric wards also. How many of you know about PTSD? Post-traumatic stress disorder. Very good. I'm glad that some of you know about it. So, I'm using this again platform for conveying this message. Mental health के बारे में हम लोग बड़े डरते हैं बात करने में. फिजिकल इंजरी होगी तो सब आ जाएंगे, फूल वूल लेके, फल फ्रूट लेके सब आ जाएंगे, गेट वेल सून एंड ऑल दैट. लेकिन अगर कोई ट्रबल मेंटल हेल्थ में है तो किसी को पता भी नहीं चलता और कोई पूछता भी नहीं है. एंड एट टाइम्स वी आर सो बैड इन दैट कि भाई वी लेबल देम कि ये तो बेकार आदमी है. आई एम गिविंग यू अ सिंपल वे टू come to know that how, if something is good or bad, with undergoing some, somebody is going undergoing some bad phase. The simple way is that हर एक बंदे की कोई ना कोई पर्सनालिटी है. आपकी टीम में आप जानते हो अपने दोस्त को, टीम मेंबर को, that this fellow is very bubbly, this fellow is very silent, or this fellow is a little talkative. If you see any different behavior of that person, or if you see the person is missing in action because of something or else, please take initiative, reach out to the person, spend 5-10 minutes, कोई ज़्यादा बड़ा टाइम नहीं है, and let that person get the comfort to speak the heart. ज्ञान देने की जरूरत नहीं है, ज्ञान बांटने के लिए तो बहुत तेज हैं हम, ये कर लो वो कर लो ऐसा बोल, उसको बोलने दो, सिर्फ उसकी सुन लो कि मेरे को ये बोल दिया. वो बिचिंग अराउंड होता है ना, इट हेल्प्स. Because the moment somebody opens his or her heart with you, he or she gets that comfort, and you will not come to know. कई बार आप ऐसी सिचुएशन में उस बंदे को हेल्प कर दोगे तब वो शायद बहुत नेगेटिव फेज में हो सकता है आप कभी ऐसे मौके में हो. तो so and if need be, if you see that things are not getting controlled, it is okay to cry, it is okay to take professional help. मैं मर्द होके, फिर से रिपीट कर रहा हूं, मर्द होके रोता हूं, कई बार रोया हूं. Because again it is a naturally given emotion to us. If by crying out some time you feel eased out, you feel good, there is nothing wrong in that. It is all crap. मर्द नहीं रोते, bullshit यार. I'm more interested in my own health and well-being. तो रोना is okay. Going for a professional help is okay. मगर do not let any of your friend get drift towards wrong side, and then you will repent कि यार मेरे पास मौका था, अगर मैं मदद कर देता तो शायद कोई लाइफ बच जाती. स्पिरिचुअलिटी ने मेरे को हेल्प करी, आप किसी और को हेल्प कर सकते हो. Let the chains continue from here. मेरे से फोटोग्राफ चाहिए तो गूगल से ले लो, बहुत सारी फोटोग्राफ है आपके साथ. हाँ, ये सवाल बढ़िया है. सारे लोग एक एक करके मत आना यार. अगर एक एक करके आना है तो 100 रुपया पर फोटो या फिर 10 पुशअप. बताओ क्या चॉइस है? यस सर, 10 पुशअप. Sir, on a lighter note, if and hopefully when, very soon, if a Bollywood movie is made on your biopic, whom would you like to see portraying you on screen?
पहले बनवाओ तो सही यार। आने वाले पल में क्या होना है उसकी क्या सोचनी यार, जब होगा तब देखेंगे। Hey, hi sir. So firstly, thank you so much for being here, right? And I'm one of a retired army son. I just hear it right from my heart. Few questions, right? So much of positivity, so much of message you delivered, right? The time this incidents happened, right? What was the reaction of your family, immediate family, friends, right? So and how you come up? What was the feedback? How you perceive after that? If you can just put it like 2 minutes of yours on this question. 2 minutes. Please. My time starts now. You see, family always feel bad, yaar. Parents especially, mothers especially. They feel कि इकलौता बच्चा 24 साल का बच्चा और वो इंजर्ड हो गया. But मजे की बात ये है कि for a very long period, for many days, doctors used to give time. I was on a dangerously ill list. Dangerously, depending upon what situation you are, dangerously ill list is the most so-called important list to observe person, क्योंकि वो कभी भी टपक सकता है. तो for a very long period, for many days, I was on DI list. बाहर पेरेंट्स परेशान रहते थे कि पता नहीं बच्चा बचेगा नहीं बचेगा, और अंदर आईसीयू में हमारे पास छोटा सा टेप रिकॉर्डर था. उस टेप रिकॉर्डर पे कभी शोले चल रही है, कभी गुरबानी चल रही है, कभी आनंद के गाने चल रहे हैं. I never felt कि I am dying. I never felt that something wrong has happened with me. In fact, there was a Tibetan wheel, prayer wheel होता है ना, वो मेरे बगल वाले मेरे साइड टेबल पे था. मैंने ड्रॉर खोला तो उसमें से तिब्बतियन व्हील बना. And the moment I saw it, a thought stuck to me कि this is for me, nothing is going to happen to me now, and I will take it away along with me. Ladies and gentlemen, I don't know who has kept it there. When I was, discharged from the ICU to a normal ward, I forgot it there. These are supernatural things. But what I am trying to say is कि मुझे कभी नहीं लगा, और शायद इसलिए बच गया क्योंकि आपने वही अगर मान लिया कि मैं गया काम से, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता. लेकिन अगर आपने सोच लिया कि अपनी कुछ नहीं, अपना कोई बैंड नहीं बजा सकता, तो फिर गब्बर सिंह का वो जो डायलॉग है, वो जो चला करता था मेरे रेडियो पे कि जो डर गया, अब पेरेंट्स तो बेचारे नहीं, मैं धुआं नहीं उड़ाता भाई. So thank you so much, everyone. I know all of you want to talk and want to have a photograph with him, but let's at least close this for now. And thank you so much, Major. Thank you, ma'am. For being here and sharing your journey with us. Thank you so much. Anybody who wish to, अगर आप मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हो, if somebody wish to ask me something, you can write here. This is a graphic novel on my story. You can write here. Thank you, ladies and gentlemen. Stay happy, keep spreading positivity and smile around you. And भारत माता की मरी हुई तरीके से भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद. God bless you all.